Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So children, you know about family, you know about occupations, you know about different type of people. So now we are going to look at our needs, okay? So this chapter's name is houses. So children, do you know what our basic necessities are? They are food, shelter and clothing. So now we are going to talk about shelter. That means houses. जो घर होते हैं वो हमें shelter provide करते. They keep us safe and comfortable. So now let's talk about different type of houses. I know I live in a name of a village or city. That is what you have to mention. Okay, I live in a what type of house. Now this we will come to know only when we start reading it. Otherwise, if you know about it because you've learnt it in your previous class, you can mention it. Okay, now a house is a place where we live in. It protects us from heat, rain, cold and other weather conditions. It also protects us from wild animals and thieves. We feel safe inside our houses. So बच्चों, हमारा घर जो होता है वो हमें सेफ रखता है. ओके, वो हमें डिफरेंट वेदर कंडीशंस में सेफ रखता है. वो हमें चोरों से सेफ रखता है. Okay, it is like a comfort zone, right? Okay, now there are different types of houses. The type of house we live in depends on the following factors, like the climate, availability of building materials and amount of money available. तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे आपका घर कैसे बनेगा डिपेंड करते हैं. जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस, आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास का क्लाइमेट कैसा होता है डिपेंड करता है उसमें. अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, ओके, जो जंगल्स वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते. तो जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसके हिसाब से वो अपने घर बनाते. अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल, ओके, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी you can build lot of big houses, like you can build a mansion for yourself. But अगर आपके पास पैसे नहीं है या कम पैसे है, उस हिसाब से आप अपना घर बनाओगे. Okay, now let's look at this in detail. Houses based on climate. In the hills, where the climate is cold, houses have sloping roofs. Okay, जो roof होता है house का वो sloping होता है, so that snow and rain can flow down easily. वो फिर उसके रूफ पे जमा होगा नहीं, वो अपने आप वो स्लाइड डाउन कर देगा. ओके, इन द वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर द स्नो नेवर मेल्ट्स, पीपल मेक हाउसेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. दीज आर कॉल्ड igloos. Okay, you look at the picture, you will come to know how an igloo looks. Now, in places where there is very heavy rainfall, जहाँ बहुत बारिश होती है, people make houses on stilts or long poles. वो अपना घर जो बनाते हैं वो थोड़ा ऊपर बनाते, ओके, जमीन से ऊपर बनाते या फिर पोल्स पे बनाते, so that the base level of the house is above the ground. Okay, this helps in protecting the house from standing water and harmful animals. These houses are called stilt houses. तो क्या होता है जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, ओके, अगर बहुत बारिश होती है तो आप देखोगे कि हमेशा पानी फ्लो होता ही रहता है. तो वहाँ पे जो ग्राउंड पे अगर आपका घर होगा तो आपके घर के अंदर पानी आ जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ द रेन्स यू मे हैव एनिमल्स वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल्स जाते होंगे तो शायद वो भी खतरा रहता है कि वो शायद आपके घर के अंदर आ जाए. इसके लिए वो घर जो होते हैं वो स्टिल्ट पे बनते, हाँ, ऊंचाई पे बनते, ग्राउंड लेवल से ऊपर बनते. ओके, एंड दीज हाउसेज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेज. नाउ इन कश्मीर एंड केरला पीपल लिव इन हाउस बोट्स. These houses float on water. ओके, अगर आप केरला या कश्मीर घूमने जाते हो तो आप ज़रूर हाउस बोट में रहिएगा. ओके, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. ऑलराइट, नाउ houses based on material and money. In villages, people make houses of mud, clay, straw and bamboo. These are called kacha houses. These houses are temporary and break down easily. These houses do not cost a lot of money.
ओके। तो गांव में अगर आप देखोगे ज़्यादा करके जो घर होते हैं वो मड के, क्ले के, ओके, स्ट्रॉ के या बैम्बू के बने होते, ओके, एंड उन्हें कहा जाता है कच्चा हाउसेस। और ये टेम्पररी हाउसेस होते हैं, तो वो कभी भी आसानी से टूट सकते हैं, ओके, और इनको बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। नाउ इन सिटीज पीपल मेक हाउसेस ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड. These are called pakka houses. These houses are permanent and do not break down easily. These houses cost more money than कच्चा houses. तो सिटीज़ में आप देखोगे कि जनरली जो हाउसेस होते हैं वो ब्रिक्स से, सीमेंट से, स्टील से, वुड से बनते हैं, ओके, और ये आसानी से टूटते नहीं हैं और परमानेंटली वहीं पे रह जाते हैं, ओके। तो इसके वजह से इन हाउसेस को बिल्ड करने में ज़्यादा पैसा लगता है, एंड दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस, ओके। आजकल विलेजेस में भी लोग पक्का हाउस बनाने लगे हैं. सो यू विल सी in villages, okay, in good areas of the villages and all, you will see that they are building pakka houses also, okay. So now all bungalows, single story, double story and tall apartments are pakka houses. सो जितने बंगलोज आप देखोगे या फिर सिंगल स्टोरी मतलब एक ही फ्लोर वाली बिल्डिंग या डबल स्टोरी जहाँ पे 2 फ्लोर्स है, ओके, या अपार्टमेंट्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वो सारे आप देखोगे तो वो होते हैं पक्का हाउसेस, ओके. नाउ पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन कैरावान्स. These houses move on wheels. Soldiers and people who go for mountaineering live in tents. Tents are made from canvas. It can be folded and are easy to carry. So ऐसे भी लोग हैं जो एक जगह रहना पसंद नहीं करते, okay, for whatever reason it may be, okay. So they live in a bus-like thing, okay, which is called a caravan, okay, and it moves on wheels. It goes from one place to another. At the same time आप देखोगे जो soldiers होते हैं, ओके, या फिर जो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्लाइंब करने जाते हैं, वो किस में रहते हैं? वो रहते हैं टेंट्स में. वो अपना टेंट कैरी करते हैं और जहाँ पे उनको जगह मिलती है वो खोल देते हैं और उसमें रह लेते हैं, ओके. दे स्पेंड द नाइट ओवर देयर एंड नाउ दीज टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस, ओके. मटीरियल जो होता है टेंट बनाने को उसको कहते हैं कैनवस मटीरियल, ओके, जो आसानी से फोल्ड हो जाता है और कैरी करने में ईजी होता है. नाउ fact zone. In big cities like Mumbai, some poor people live in small huts in low areas called slums. तो मुंबई जैसे एरिया में there are people who are very poor, okay, और वो जो एरिया में रहते हैं जहाँ पे अपने छोटे छोटे घर बना के रहते हैं उस एरिया को कहा जाता है slums. Alright, now let's look at how we can keep our house clean. So keeping a house clean. घर छोटा हो या बड़ा हो, cleanliness has to be there, okay, because it will prevent us from catching any diseases, okay. Now we should keep our house neat and clean to make it healthy and comfortable, okay. We should sweep and mop the floor every day. The furniture, doors and windows should be dusted every day, okay, क्योंकि जितनी मिट्टी आती है, जितनी धूल आती है, उसके साथ साथ आते हैं कीटाणु. तो to get rid of them, we need to keep our house neat and clean. We need to sweep it, we need to mop it, we need to dust it also, okay. Now, a house should have big windows to let in sunlight and fresh air. This makes the house bright and dry, which helps to keep insects and germs away. ओके, सो ऑलवेज आपके घर के जो विंडोज़ होंगे आप हमेशा डे में ड्यूरिंग द डे टाइम एटलीस्ट कीप योर विंडोज ओपन सो दैट द एयर गेट्स प्यूरिफाइड इनसाइड योर हाउस. देयर इज गुड सनलाइट दैट कम्स इन, ओके, जो इंसेक्ट्स को मारने में, जर्म्स को भगाने में हेल्प करता है. नाउ द किचन शुड बी केप्ट स्पेशली क्लीन. Flies and cockroaches breed in dirty sink and rotting food and vegetables. Flies carry germs which can get into our food and make us ill. So, किचन ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत जल्दी मक्खियाँ या कॉकरोचेस आ जाते हैं. सो इसके लिए किचन को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, ओके, क्योंकि ये कॉकरोचेस और ये मक्खियाँ अपने साथ क्या लेके आती है? जर्म्स लेके आते हैं. Okay, and then if we have that food, okay, we have a lot of chances of catching infection and falling sick. Okay, now जो खाना भी होता है हमेशा उसको ढक के रखना है.
अगर कोई मक्खी गिर गई तो you won't be able to eat that food. So always keep the food covered. Okay. Now, garbage should be collected in a covered dustbin. If it is not covered, flies make it their home. Garbage must be cleared every day. It should be thrown outside the house. Flies and germs breed in rotting garbage. Okay? Now, garbage, आपके घर का जो भी कूड़ा कचरा होता है वो उसको डेली निकालना है. Okay? And जो डस्टबिन होते हैं उसको कवर करके रखना है. Okay? So that the flies and all don't make it a house. Now, drains should be covered so that mosquitoes do not lay their eggs and spread diseases. So जो भी drains होते हैं उनको cover करके रखो, नहीं तो वहाँ पे मच्छर आ जाएंगे. Okay, and you know मच्छर are very dangerous because उसकी वजह से आपको बीमारियाँ जैसे डेंगी, मलेरिया हो सकता है, which is very dangerous and not good for your health at all. Okay, now bathrooms and toilets must be cleaned with disinfectants. Toilets should be flushed after every use. The floors should be kept dry to keep insects and germs away. Use freshener to keep them odor free. Okay, bathrooms, toilets हमेशा flush करो, clean रखो, okay, और जहाँ जहाँ possible है वहाँ पे room fresheners या fresheners use करो. Okay, now things should be kept neatly in their proper place in a house. हमेशा चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे ढंग से रखो. Okay, like so now these are the important things that you have to keep in mind. Okay, now look at this exercise. It is asking you to do something, do an activity by yourself. So do it yourself. Answer the questions orally. Okay, where do you throw the garbage of your house? आप garbage कहाँ फेंकते हो? Okay, do you flush the toilet after use? How do you keep your house clean? And is the area around your house clean? So बच्चों, it is not only your own house, but you also have to ensure that your neighborhood, the area that you are living in, is neat and tidy. Okay, so that बाहर से जो germs है वो आपके घर के अंदर ना आए. Okay, now let's look at decorating house. How can we decorate our house to make it look more beautiful? Okay, people like to decorate their houses in different ways. They use flower vases, potted plants, wall hangings, paintings, photo frames and wind chimes etc. to decorate their houses. In North Bharat, people make beautiful rangoli with different colors and flowers on special occasions. In South Bharat, people make kolam in different designs. Parsis make beautiful designs with flowers called bhukalam during their weddings. So, ये अलग अलग चीज़ें हैं जैसे रंगोली बना के या कोलम बना के and all, they make their house look more beautiful. Okay, it enhances the beauty of your house. In some places, people decorate the walls by making special paintings. Madhubani is one such example. अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स लगा के या पेंटिंग्स बना के भी हम अपने घर को सुंदर कर सकते. Okay, now find out. Is there any special way in which you and your family decorate the house and when and how? अभी आपको सोचना है कि कब कौन से ऐसे occasion पे आप अपने घर को और सुंदर बनाते हो. Okay, and talk about this and do mention about this in your book or talk to your teacher and friends also. Okay, now remember, a house is a place where we live in. The type of house we live in depends on climate, availability of building materials and amount of money available. We should keep our house neat and clean to make it healthy and comfortable. We can decorate our house using flower vases, potted plants, paintings, etc. Clear? Now, let's look at the word bank, the important words, the new words that we've learned. Stilts, it's a set of wood or sticks used to support building. ऐसे poles होते हैं, okay? Now, story means floor. Okay, disinfectant is a special liquid that kills germs. जैसे आपके घर में फिनाइल होगा, that is a disinfectant. Okay, now clearly read this chapter again. Okay, because it has a lot of information about the houses, and then start doing the exercises.